हाय। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 42nd क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का नाम है इन्वेस्टमेंट्स इन 2016। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है जिसका नाम है इंश्योरेंस और उसका स्कीमा है PID TIV 2015 TIV 2016 लेट लॉन। ओके, तो देखते हैं इसकी डिटेल्स। व्हाट आर दीज कॉलम्स? PID इज़ द प्राइमरी की विच मीन्स कॉलम विद द यूनिक वैल्यूज. Each row of this table contain information about one policy where PID is the policyholder's policy ID. Okay, so this is policy ID. TIV 2015 is the total investment value in year 2015 and TIV 2016 is the total investment value in year 2016. LAT stands for latitude of the policyholder city and it is guaranteed that LAT is not null. Lon is the longitude of the policyholder city and this is also guaranteed that this will not be null. Okay, so what they have given here is this is a policy ID. Okay, and these are the total investment value in 2015 and 2016 respectively, and these are the geographical location of a person who has this policy ID, right? So this is the schema of this table. अब यहाँ पे देखते हैं what is the problem statement. So we have to write a solution to report the sum of all investments value in 2016, which is TIV 2016 for all policy holders. तो जो नीचे दो कंडीशन दी गई हैं उनको जो सेटिस्फाई करते हैं पॉलिसी होल्डर्स, उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमें बतानी है फॉर द ईयर 2016. ओके, तो द कंडीशंस हियर आर have the same TIV 2015 value as one or more other पॉलिसी होल्डर्स. तो कोई पॉलिसी होल्डर जिसकी 2015 की इन्वेस्टमेंट वैल्यू बाकी पॉलिसी होल्डर्स के जितनी हो एंड आर नॉट लोकेटेड इन द सेम सिटी एज अदर पॉलिसी होल्डर, विच मीन्स उस सिटी से वो पर्सन यूनिकली बिलोंग करता हो, मतलब जो लेट और लॉन का कॉम्बिनेशन है, एट्रीब्यूट पेयर है, वो उस पर्सन के लिए यूनिक हो और उसकी जो TIV 2015 है वो किसी और के साथ मैच होती हो. तो ऐसे पर्सनस की हमें टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू फॉर 2016 रिपोर्ट करनी है या रिटर्न करनी है. ओके, एंड दिस नीड्स टू बी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड रिजल्ट फॉर्मेट इज इन द फॉलोइंग एग्जांपल. तो यहाँ पे देखते हैं. In the input we have PID 1234 and these are the investment values, these are the latitude and longitude. So now if we see uh, for PID 1 TIV 2015 in 10. तो इफ़ वी सी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकती है बिकॉज PID 3 and 4 also have 10. Okay, and latitude and longitude is 10 10, which is also unique. If you see, there are no other PID which have this combination of latitude and longitude, so this will be a candidate for our answer. Which means TIV 2016, which is 5, this is a candidate for our answer. Now if we check for PID 2, so we can both the conditions are not getting satisfied here because 20 is a unique value for 2015. तो मतलब first condition is not getting satisfied and also 2020 is the latitude longitude for policy ID holder 3 also. So in this way we can rule out these two candidates. These are not satisfying the conditions. Now if we check for PID 4, total investment value is 10, which is okay. PID 1 is also having same and even PID 3 is also having same, and here the latitude longitude 40 40, this is also unique. So total investment value of the policy holders which are satisfying these two conditions is 40 plus 5. So that's what we have got in the answer, 45. And here is the explanation. तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा. एंड अगर अभी भी कुछ डाउट है तो वंस वी राइट द सीक्वल सोल्यूशन तो और क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट राइटिंग द सीक्वल सोल्यूशन. So first thing is we will have to use a self join because we need to compare the rows in the same column. Okay, so how we will do is this. We will say first I will write the from insurance. Okay, insurance is the table name. यहाँ पे इसको alias दे देते हैं A and we will join it with insurance B. Okay, and join condition will be, what is the first condition? TIV 2015. Okay, A dot TIV 2015 should be equal to B dot TIV 2015. That is one thing. Now if we do a self join और ये condition हम लगाएंगे
तो इट विल मैच विद इट सेल्फ। ओके, तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज दैट पी आई डी शुड नॉट बी इक्वल, सो ए डॉट पी आई डी शुड नॉट बी इक्वल टू बी डॉट पी आई डी, विच मीन्स सेल्फ जॉइन में ये खुद को ही आउटपुट में ना दे दे। तो उसके लिए पी आई डी मैच नहीं होना चाहिए, बट टी आई वी 2015 मैच होना चाहिए। ओके, that is second condition, and the third condition is that concatenation of a dot lat, which means latitude and longitude, should be unique. Okay, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, we will write a subquery here, and the subquery will be concatenation of lat and long. This we will select from insurance. Okay, and we will do group by 1 and having count of star equal to 1. So what it will ensure is that जो हमारा latitude और longitude का combination है वो यूनिक हो फॉर दैट यूज़र, ओनली दोज वी नीड इन द आउटपुट। ओके, तो अब यहाँ पे हम अपना सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। सो व्हाट वी नीड इज वी नीड सच डिस्टिंक्ट पॉलिसी आईडीज एंड वी नीड द 2016 इन्वेस्टमेंट फॉर दीज यूज़र्स। ओके, तो इसको यहाँ पे अगेन एलियास दे देते हैं। तो अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, लेट अस सी व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग। ओके, इफ़ यू सी, जैसा हमने एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया था, फॉर यूज़र आई डी 1 एंड यूज़र आई डी 4 द बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइंग, और वही हमें आउटपुट में मिल रहा है, बट द आउटपुट व्हाट वी हैव टू गिव इज़ द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज। सो वी कैन डू दैट। सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल मेक इट अ सी टी ई। ओके, इन्वेस्टमेंट डेटा एज, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, एंड फ्रॉम दिस वी विल सिलेक्ट। So what we will select is sum of TIV 2016, and I have already used round function here क्योंकि हमें 2 decimal places तक round करना था, and we will give it alias 2016 from investment data. So let us see what is the output we are getting now. Okay, we are getting the expected output as in the test case or example. तो इस solution को submit कर देते हैं। ओके, दिस सॉल्यूशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो आई होप इस प्रॉब्लम का सीक्वल सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्काला स्पार्क में। एज ऑलवेज हमारे पास हमारा स्पार्क सेशन रेडी है, और जो इंश्योरेंस टेबल था उसको मैंने यहाँ पे डेटा फ्रेम में स्टोर करके रख लिया है। तो अब हम अपना सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जो एक सब क्वेरी यूज़ करी थी टू गेट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसके लिए यहाँ पे हम एक अलग डेटा फ्रेम बना लेते हैं। वी कैन यूज़ अ सब क्वेरी ऑल्सो हेयर, बट यहाँ पे रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अलग डेटा फ्रेम बना लेते हैं। तो व्हाट वी विल डू हेयर इज़ we will name this column lightlon because we are going to concatenate this. So we will concatenate these two values, and this will be latitude and longitude. ओके, और अभी जो हमें इसका आउटपुट मिलेगा, इसका जो डेटा फ्रेम मिलेगा, और उसको हम कर देंगे ग्रुप बाय with this column latitude and longitude. Okay, and इसका ले लेंगे count. Why we are doing so? Because we need the policy IDs which are unique for a given city. That is one of the condition in our problem statement. Okay, तो यहाँ पे count column को हम filter करेंगे where count is 1 as we did in our SQL solution also. और अब हमारे इस डेटा फ्रेम में से काउंट कॉलम को ड्रॉप भी कर देंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड लेटर। दिस स्टेप इज़ ऑप्शनल इफ़ यू वांट टू ड्रॉप और इफ़ यू वांट टू कीप इट, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट डेटा फ्रेम बनाएंगे वेयर वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर सी टी ई। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस डेटा फ्रेम को, क्योंकि हमें सेल्फ ज्वाइन करना है, सो वी विल गिव इट एलियास। ओके,
and then we will join it with insurance data frame, again another alias b, and the join condition was जहाँ पे TIV 2015 मैच होगा. ओके, सो a डॉट TIV 2015 should match with column b dot TIV 2015. This was one of the condition. Other condition was that PID should not match, तो वो condition भी यहाँ पे लगा देते हैं. A dot PID should not be equal to B dot PID. This is the second condition. ओके, और अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कॉलम A डॉट PID, कॉलम A डॉट TIV 2016, क्योंकि हमें एट द एंड 2016 का ही सम बताना है फॉर द यूज़र्स और पॉलिसी होल्डर्स विच आर सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस. और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगेन वी विल डू अ कॉन्कैटिनेशन फॉर दिस डेटा फ्रेम ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो लेट्स डू इट लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पे इसको एलियास दे देंगे लैटलॉन. ओके, अभी हमने एक लैटलॉन डीएफ बनाया है जहाँ पे हम उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को या उस जोग्राफिकल लोकेशन को सिलेक्ट करें जहाँ से ओनली एक PID बिलोंग करती है. एंड वी हैव दिस इंटरमीडिएट डेटा फ्रेम वेयर वी आर सिलेक्टिंग एज पर द जॉइन कंडीशन, जहाँ पे 2015 की इन्वेस्टमेंट मैच होती है विद सम अदर यूज़र और सम अदर पॉलिसी होल्डर. तो अब हम अपना फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे और इसको स्टोर करेंगे रिजल्ट डेटा फ्रेम में. And what we need to do is we will take the intermediate data frame and we will join it with the latlon df. Okay, and the join condition is latlon. तो यहाँ से हमें वो PIDs मिल जाएंगे जिनका latlon count 1 है. ओके, सो दैट वाज द सेकंड कंडीशन. और यहाँ पे हमें क्या करना था कि टोटल सम ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट 2016 हमें सेलेक्ट करना था, एंड वी हैव टू राउंड इट ऑफ टिल 2 डेसिमल प्लेसेस. दैट आई हैव डन ऑलरेडी. और यहाँ पे इसको एलियास दे देते हैं TIV 2016. तो चलिए रिजल्ट डेटा फ्रेम को कंसोल पे प्रिंट करके देखते हैं, आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट. ओके, येस, वी आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट जैसा हमें LeetCode के SQL सोल्यूशन में मिला था. टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू फॉर 2016 45. तो आई होप आपको इस प्रॉब्लम का SQL एंड स्काला स्पार्क सॉल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.